Welcome class. Let's start the third chapter of your syllabus, Electrochemistry. The weightage of this chapter in a board examination is around 5 to 6 marks, and you can also expect 2 to 3 questions in different competitive exams. This chapter is also important for JEE advanced level. So see, electrochemistry is a branch of chemistry which deals with the study of electrical and chemical energies, their interconversions and conductances in solutions. So this chapter can be studied under 3 heads. First one is electrochemical cells, second conductances in solutions, and third electrolytic cells. So start the first one, electrochemical cells. So electrochemical cells, there are 2 types, electrolytic cells and galvanic cells. Electrolytic cells are the devices in which electrical energies are converted into chemical energies, while in galvanic cells, chemical energies are converted into electrical energies. Galvanic cells are further of 2 types, chemical cells and concentration cells. In chemical cells, there is overall cell reaction, and this reaction is redox reaction, while in concentration cells, there is no overall cell reaction. In chemical cells, EMF or voltage, it arises due to potential difference, while in the concentration cells, EMF or voltage, it arises due to concentration difference. The example of chemical cell in your syllabus is Daniell cell. So see, what is Daniell cell? Here zinc rod, it acts as anode, it is a negative electrode. Copper, it acts as cathode, it is a positive electrode. Electrolytes, here are zinc sulfate and copper sulfate. Oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode. It means that here the zinc undergoes oxidation while copper undergoes reduction. You can learn it as an ox means oxidation at anode and a red cat means reduction at cathode. So see the structure of Daniell cell. Say this is the diagram of Daniell cell. Say in the cell there are 2 half cells. This half cell is known as oxidation half cell or anodic half cell, and this half cell is known as cathodic half cell or reduction half cell. It means that in this chamber or in this cell oxidation takes place, while in this cell reduction takes place. So here we can say that indirect redox reaction takes place. Indirect redox reaction means here the redox reactions, that is the oxidation reduction takes place at 2 different chambers or 2 different half cells. Say in this half cell, zinc, it acts as anode, while in this half cell here the copper acts as cathode. These 2 electrodes are connected by a wire, and there is a voltmeter or galvanometer for the detection of voltage or the EMF generated in the cell. देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक वायर से कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर है जो वोल्टेज डिटेक्ट करेगा, यानी यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका डिटेक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे. सो इन दिस केस यू सी दैट द केमिकल एनर्जीज, they are converted into electrical energies. So see here the zinc, it acts as anode and it undergoes oxidation, that is it converts into zinc ion. यहाँ पे देखिए zinc ion में convert हो रहा है, that is there is loss of electron, और आपको पता है कि the process in which loss of electron takes place is oxidation. So here the zinc undergoes oxidation and converts into zinc ion, and it loses its electrons at the rod. अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने रॉड पे छोड़ के ये जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे इस जिंक रॉड का मास डिक्रीज़ कर रहा है. इट मीन्स दैट इट गेट्स डिप्लीटेड, इसका डिप्लीशन होगा, इसका मास डिक्रीज़ करेगा, और यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. सो वी कैन से दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इंक्रीजेस हियर. से ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रॉड के ऊपर हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा वायर से. सो वी सी डैट हियर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड. एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है,
और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्यूप्रिक आयंस के कांटेक्ट में आएंगे, जो क्यूप्रिक आयन सॉल्यूशंस के अंदर हैं, सो क्यूप्रिक आयंस दे गेन दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर, दैट इज दे गेट डिपॉजिटेड एट दिस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे देखने में क्या दिख रहा है कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, गेन होकर वो कॉपर में डिपॉजिट हो रहा है। इट मीन्स दैट द मास ऑफ दिस कॉपर रॉड इंक्रीजेस। यहाँ पे कॉपर रॉड का मास इंक्रीज़ कर रहा है, यानी इसके ऊपर डिपॉजिट होगा तो उसका मास इंक्रीज़ करेगा। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट के अंदर क्योंकि क्यूप्रिक आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहा है, सो वी कैन से दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट डिक्रीजेस। अब यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक यू शेप का ट्यूब लगाया गया, एंड दिस यू शेप ट्यूब इज़ नोन एज सॉल्ट प्रेस। और सॉल्ट प्रेस के अंदर हम कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। और इसके अंदर हम एक पेस्ट लेते हैं जिसको हम लोग एगर एगर कहते हैं, एक तरह का एल्गी है। इसके अंदर हम लोग कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। तो सॉल्ट प्रेस को हम लोग बाद में देखेंगे, इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे। सो see here, we see that here the indirect redox reaction takes place. Here the zinc undergoes oxidation and the copper undergoes reduction, and due to this redox reaction, that is the energies involved in this redox reaction, they are converted into electrical energies, and we will detect some voltage or the EMF, and it is known as E cell or EMF of the cell. So see here the anode. At anode oxidation takes place, means here the zinc, it converts into zinc ion after losing electrons. इट इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉनों को रॉड पे छोड़ के जा रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को ये नेगेटिवली चार्ज कर देगा, दैट्स व्हाई इट इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जिंक रॉड लूजेज इट्स मास, आपको दिखा था यहाँ पे, क्योंकि जिंक डिप्लीट कर रहा है, इसका मास डिक्रीज करेगा। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इंक्रीजेस, क्योंकि जिंक आयन यहाँ पर सॉल्यूशन में आ रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। एंड अनायंस मूव टूवर्ड्स एनोडिक चैम्बर। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पोटेशियम आयोडाइड, इसका जो आयनिक पार्ट है यानी कि आयोडाइड आयन, ये मूव करके एनोडिक चैम्बर के अंदर आएगा। ये क्यों आएगा इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और see here in cathodes, at cathode reduction takes place. Here the copper, it after gaining 2 electrons converts into copper solid, means here the copper undergoes reduction. It is a positive electrode, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये गेन कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, दैट्स वाई दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। कॉपर रॉड गेन्स इस मास, कॉपर रॉड के ऊपर क्योंकि डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मास ये गेन करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट डिक्रीजेस, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कॉपर सल्फेट का डिक्रीज कर रहा है। एंड कैटायंस मूव टूवर्ड्स कैथोडिक चैम्बर, यानी कि यहाँ पे जो इंटरनल मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव आयन है यानी पोटेशियम आयोडाइड मूव टूवर्ड्स द कैथोडिक चैम्बर। इसका भी हम लोग देखेंगे रीज़न क्या है। सो सी हियर वी सी दैट इन दिस केस द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड, एंड वी नो दैट द करंट, conventionally the current moves opposite to that of the flow of current electrons. So here the current moves from cathode to anode. तो आपको पता है कि करंट इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है, सो वी कैन से दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड. So this is the movement in the external circuit. So see in the external circuit we see that electron flow from anode to cathode while current flows from cathode to anode. अब अगर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दिया, मतलब ई एक्सटर्नल, और अगर ई एक्सटर्नल इट इज़ ग्रेटर देन ई सेल, मीन्स यानी कि यहाँ पे इस सेल के अंदर जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है अगर उससे ज़्यादा हम लोग अपोजिट साइड्स में ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि रिएक्शन रिवर्स कर जाएगा. इट मीन्स दैट हियर द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक and current flows from zinc to copper and the chemical reaction of the cells is reversed. It means that here copper undergoes oxidation while zinc undergoes reduction. तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि what happens when an external voltage greater than the E cell or the EMF of the cell is applied. तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये आंसर देना पड़ेगा. So this is all about the Daniell cell.